Hello students, welcome to your science class. Today we are going to discuss part 6 of this particular chapter, that is body movements, and in this particular video we are going to start a new topic, that is gait of animals. And in this particular video we will see two examples. First one will be earthworm, then second will be snail, then we will have assignments. So let's start with the gait of animals. सबसे पहले we need to understand that what is the meaning of gait. Gait means चाल, हिंदी में इसको बोलते हैं चाल. मतलब how animals move, how animals perform their movement, it depends that what kind of animals they are. So animals crawl, fly, slither, swim, creep or walk to move from one place to another. See, in this particular video and the slide you are seeing here, so this is duck, this one is kangaroo, this is human beings, snake, horse, snail, fish and then cockroach. So these are the animals you are seeing. So someone can fly, someone can crawl, someone can walk, someone can run, someone can swim. So this depends on that what kind of animals they are. So depending on their body characteristics, depending on their requirement, they perform movement. So this is the thing, how animals move and why animals move. So animal locomotion is as a result of limbs being used in a certain way. So it depends that whether they are having limbs, whether they are having that kind of body structure, their limbs are present or not. So depending on that, they can slither, they can walk, they can run, they can fly, they can swim, they can do what is necessary for them, for their movement. So different animals have adopted to different modes of movement. This movement enables animal to lead an active lifestyle, obtain food, search for mates and even for respiration. So here we need to understand that why they are showing movement. So this particular thing, why there is movement, now we are going to understand. So if they want to live active lifestyle, suppose you are there and you are fixed at one position like plants. So how you will be able to obtain your food, how you will be able to protect yourself from adverse situations. So in that case we need to show some kind of movement to protect ourselves, to fulfill our requirement. So this is the reason we are showing movement. Okay, so I told you that it will depend that what kind of organism we are discussing. तो जैसा organism होगा उस तरीके का movement होगा. So we will see examples that are mentioned in NCERT book. So we will stick to our syllabus. The first organism is shown is earthworm. So body of an earthworm is made up of many rings joined and end-to-end manner. So in this particular slide you can see here, you can see variety of rings are here, many rings are here. You see whole body is looks like that many rings are joined together. And so here you can see the mouth, then head and then clitellum, then body segments. So many segments are here, and then at the end tail is there. So this is the overall structure, outer structure you can see in earthworm. So here we are going to discuss only about movement. So it is able to expand and shorten its body because of presence of muscles. It extends its front portion first while the rear portion is at rest, fixes its front portion firmly, then release rear portion to extend it forward while shortening its body, thereby covering small distances. यहाँ हमें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि ये जो अर्थवॉर्म, हिंदी में इसको केचुआ बोलते हैं, कैसे चलता है. तो
ये अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा अभी कि हाउ इट इज़ एबल टू मूव। तो इसमें यही है कि जो इनके बॉडी जो होती है वो मसल्स से बनी होती है। चूँकि ये एनालिट्स कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो मसल से बनी होती है और ये मसल के कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन से करते हैं। तो क्या करते हैं, फ्रंट पोर्शन जो हेड है इनका वो एक जगह वो टिकाते हैं, स्टिक कर देते हैं। कैसे स्टिक करते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा। और उसके बाद वो धीरे से फिर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और फिर जितना वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उतना ही वो आगे बढ़ते हैं। तो छोटा छोटा डिस्टेंस जो है वो कवर करते हैं। आपने देखा होगा कि केचुआ कितना धीरे धीरे चलता है। सो रिपीटेड मसल कॉन्ट्रैक्शंस एंड रिलैक्सेशंस इनेबल मूवमेंट ऑफ अर्थवॉर्म इन द सॉइल। सो इट इज़ फर्दर एडेड बाय सिक्रीशन ऑफ अ स्लाइमी सब्सटेंसेस। आपको देखने को मिलेगा, अगर आप पास से देखें तो केचुए की जो बॉडी होती है, जो अर्थवॉर्म की बॉडी होती है वो चिपचिपी होती है, स्टिकी मटेरियल होता है जिसको स्लाइम बोलते हैं। उस तरीके का सिक्रेशन होता है वहाँ पे, जिससे कि वो काफ़ी स्मूथ हो जाए और उनको सॉइल में मूवमेंट के लिए कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि आसपास के मिट्टी को वो गीला कर देते हैं जिससे कि उनकी बॉडी काफ़ी अच्छे तरीके से वो फिसल सकें। तो ये होता है इसके साथ। सो इट इज़ एबल टू फिक्स इट्स बॉडी पार्ट टू द ग्राउंड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल ब्रिसल्स प्रोजेक्टिंग आउट ऑफ इट्स बॉडी विच इज़ कनेक्टेड टू द मसल्स। मैंने आपको कहा कि मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे वो ज्वाइंट कर लेते हैं। तो दिस इज़ द ब्रिसल्स, हियर वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस इज़ द पर्टिकुलर थिंग। ओके, तो ये ब्रिसल्स जो होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं इनको किस चीज़ के लिए, ग्राउंड को अच्छे तरीके से होल्ड करने के लिए, अपने अपने बॉडी को फिक्स करने के लिए उस पर, जिसकी कि वो अच्छे से हो पाए। तो दे हेल्प टू गेट अ ग्रिप ऑन द ग्राउंड। तो इन ब्रिसल्स की मदद से ये ग्रिपिंग पॉसिबल हो पाती है। अगर ये ब्रिसल्स नहीं होते तो यहाँ पर ग्रिपिंग थोड़ा मुश्किल हो जाता है, या कह सकते हैं कि इम्पॉसिबल था। ओके, तो ये ब्रिसल्स हैं जो कि मदद करते हैं। अब इस पर्टिकुलर डायग्राम में आप देखिए कि कॉन्ट्रैक्शन जहाँ हो रहा है उसके पीछे से आगे की तरफ कॉन्ट्रैक्शन अलग दिशा में मूव कर रहा है और बॉडी जो है वो अलग दिशा में मूव कर रही है। देखिए जो ये एरो बनाया गया है, कॉन्ट्रैक्शन पीछे की तरफ बढ़ेगा और उसी बॉडी में, और मूव कहाँ कर रहा है, ये फ्रंट डायरेक्शन, यहाँ आगे की तरफ मूव कर रहा है। कॉन्ट्रैक्शन यहाँ हो रहा है, ठीक है। आप देखिए कॉन्ट्रैक्शन धीरे 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 पीछे जा रहा है और बॉडी जो है वो धीरे धीरे आगे जा रही है। तो ये होता है तरीका। अच्छा, जैसे ही ये एक साइकिल इनकी पूरी होती है दूसरा कॉन्ट्रैक्शन फिर से शुरू हो जाता है। ओके, तो दिस contraction and relaxation of muscles in the body of earthworm is responsible for the movement of this particular earthworm. Okay, तो इस तरीके से ये यहाँ पर मूवमेंट पॉसिबल हो पाता है अर्थवॉर्म में। आपको पता है रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि रिंग्स आप देख सकते हैं यहाँ एक एक रिंग को बड़ा बड़ा करके दिखाया गया है कि किस तरीके से ये रिंग डेवलप होती हैं और फिर ये कैसे, यहाँ थोड़ा बड़ा करके दिखाया गया इसलिए आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये रिंग्स में एक एक ये कॉन्ट्रैक्शन एक ग्रुप में हो रहा है और ये बॉडी जो है आगे मूव करती हुई दिखाई दे रही है। तो ये हुआ। अब आप वीडियो में देखेंगे तो आपको थोड़ा क्लियर हो जाए। ध्यान से इसको देखिए कि कैसे कैसे यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है और कैसे वो फिक्स करके आगे बढ़ रहा है। देखिए यहाँ पे आप देखिए, यहाँ होल्ड किया हुआ है, यहाँ देखिए होल्ड किया हुआ है, पीछे कॉन्ट्रैक्शन, अब देखिए रिलीज़ किया, जितना कॉन्ट्रैक्ट किया है उतना ये आगे बढ़ेगा। ठीक है, आप अगले में और देखिए ध्यान से, ये जहाँ फिक्स किया था पीछे से ये बॉडी आपको आती हुई दिखाई देगी। फिर ये देखिए आगे बढ़ा, फिर ये फिक्स करेगा अपने आप को, यहाँ फिक्स किया हुआ, फिर पीछे से आपको आते हुए दिखाई देगा। तो ये है अर्थवॉर्म का मूवमेंट और ये छोटा छोटा डिस्टेंस कवर करता है। जितना कॉन्ट्रैक्शन और जितना रिलैक्सेशन होता है एक बार में उतना ही मूवमेंट होता है और फिर ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूस होता रहता है। तो ये रहा हमारा अर्थवॉर्म। इसके बाद अगला जो है हमको देखना है वो स्नेल है। स्नेल भी आपने देखा होगा कि कैसा दिखाई देता है, इसको हिंदी में घोंघा बोलते हैं। ओके, तो स्नेल, सो अ स्नेल कैरीज अ हार्ड outer covering called as a cell. Okay, it is made up of calcium carbonate. The cell is dragged by the snail and it does not help in their locomotion. Cell has an opening through which the body and head project out.
So here it is written, this cell is made up of calcium carbonate, means something that is made up of calcium. Okay, so cell is made up of calcium carbonate, and cell covers the whole body. It is not there to help in their locomotion. Okay, but for what it is there to protect the snail's body. So this cell is responsible for protecting the body of snail. Okay, if cover will be not there, hard covering will be not there, so you know that body of this snail is very delicate, very weak body they are having. They are not having all organs. So in detail you will see in upcoming slides. So this is the covering which is responsible for protection, but it is not going to help anyway in the movement. Okay, so out of the cell, this body comes out when they are going to show any kind of movement. So the body is made up of muscles and is the food of the snail. यहाँ हमको बात समझने की ज़रूरत है कि जो मसल्स होती हैं वो पूरी बॉडी बनाती हैं। फूट का कोई स्ट्रक्चर कुछ अलग से दिखाई नहीं देता कि स्नेल में कहाँ किस तरफ फूट लगा हुआ है, तो इसका फूट जो होता है वो क्लियर नहीं होता, लेकिन जो मसल्स होती हैं वही उसका फूट वाला पोर्शन बनाती हैं, जिससे कि उसके मूवमेंट में आसानी हो। तो सेल्स प्रोटेक्ट स्नेल फ्रॉम देयर प्रेडेटर्स, जैसा मैंने आपको बताया। सो दे मूव इन अ वेवी मोशन, वेव लाइक मोशन। आपने देखा होगा नदी में जब जल पानी जो है वो मूव करता है तो आपको वेव क्रिएट दिखाई देते हैं। उसी तरीके से वेवी स्ट्रक्चर मतलब आपको पता होगा कि वेव मीन्स व्हाट, ऐसे 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 ये वेव चलती है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये मूवमेंट शो कर पाता है। आप देखेंगे कि कैसे ये मूव कर रहा है। इट सिक्रेट्स म्यूकस। Okay, they propel by riding on a layer of mucus through muscles contraction of the foot. It secretes mucus which enables swift movement. Okay, mucus की वजह से यहाँ पर भी जो सिक्रीशन है, जो स्लाइमी सब्सटेंस है जो कि इनको काफ़ी लुब्रिकेट करता है और जिसकी वजह से ये अच्छे तरीके से ये मूव कर पाते हैं। कैसे होगा ये आप अच्छे से देखिए। पहले यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर ये सेल है, ये कवरिंग आपको दिखाई दे रही है, और ये आपको ये सारी चीज़ें यहाँ मेंटल हेड और ये फूट आप ध्यान से देखिए, कोई अलग से स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन ये जो डाउन साइड जो मसल्स हैं यही इसका फूट पोर्शन है। ओके, और ये माउथ, लोअर टेंटिकल्स, देन अपर टेंटिकल्स, आइज़, ये होता है इनका स्ट्रक्चर। और कलरफुल डायग्राम में आप देखिए तो आपको कलरफुल डायग्राम में ये आपके सामने नीचे वाला जो डायग्राम है ये है। ओके, तो ये हो गया स्नेल। अब ध्यान से देखिए इस वीडियो को कि किस तरीके से ये मूवमेंट शो कर रहा है, वेवी मूवमेंट है। यू कैन सी वेरी क्लियरली हाउ दिस इज स्लाइडिंग ऑन अ लीफ. Okay, and this is possible because of secretion of this mucus and the food they are having, that is muscular food. So because of that they are able to show this kind of movement. Okay, so we studied about earthworm, then snail. Okay, so how they are able to move and what kind of body structure they are having. So in upcoming videos we will see others organism way of movement. So what you have to do, you have to make notes and diagrams. Okay, so I know that you will do well, and this is the reference and many references are there. So that's all for this video. Thank you everyone. Jai Hind.